हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये वीडियो में मैं एक नो फाउंडेशन मेकअप लुक करूँगी फॉर समर्स, एंड दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय Amazon. So all the products I am using in this video you can find it in the description box. I got it from Amazon. So सबसे पहले मैं एक बेयर फेस में यूज़ कर रही हूँ रोज़ वाटर फ्रॉम कामा आयुर्वेदा, बिकॉज दिस इज़ अ समर मेकअप लुक. वी रियली वांट दैट हाइड्रेशन. और उसके बाद मैं अच्छे से मॉइस्चराइज़ करूँगी अपना फेस यूजिंग एम्ब्रोलाइज मॉइस्चराइजिंग क्रीम. सो दिस इज़ अ क्रीम जो कि आपका एक मेकअप प्राइमर का भी काम करता है, एंड यू कैन ईजिली फाइंड इट ऑन Amazon. सो इट्स अ 2-in-1 प्रोडक्ट. मॉइस्चराइज़र के साथ साथ ये आपका बेस भी प्राइम करेगा. एंड यू कैन सी कितना हाइड्रेटिंग है. माई स्किन स्टार्टेड लुकिंग सपल एज सुन एज आई अप्लाइड दिस मॉइस्चराइज़र ऑन माई फेस. Now this is a no foundation look, but I'm gonna correct the pigmentation of my face. So मैं अपने dark circles और pigmented area अच्छे से कंसील करूँगी, करेक्ट करूँगी, एंड जहाँ पे भी मुझे लग रहा है ज़रूरत है. सो आई एम यूजिंग Maybelline Fit Me Concealer in the shade Cafe. I'm almost out of this. I'm using the older one, but I got the new one as well. So मैं वहाँ यूज़ करूँगी जहाँ पे मुझे ज़रूरत है, जैसे कि अंडर माई आइज़, साइड्स ऑफ माई माउथ, एंड जहाँ पे भी मैं फील करती हूँ कि आई हैव सम डार्कनेस, तो वहाँ पे मैं एक डार्कर कंसीलर के साथ करेक्ट करूँगी. ऑल्सो साइड्स ऑफ नोज़ एंड सम scars over here. Now to blend everything out, मैं यूज़ कर रही हूँ Cuffs and Lashes का कंसीलर ब्रश in F019, and I'm just gonna blend it everything. तो स्टैम्पिंग मोशन में मैं ब्लेंड आउट कर रही हूँ. इतना भी ब्लेंड आउट नहीं करना कि करेक्टर दिखे ही ना, सो थोड़ा सा करेक्टर विजिबल होना चाहिए. बट आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इसने डार्कनेस जो है मेरे फेस की वो कवर कर ली है, करेक्ट कर दी है. और जो भी ब्रश में बचा है, आई एम जस्ट डूइंग इट ऑन माई फोरहेड. मेरा फोरहेड बहुत टैन हो जाता है समर्स में. सो या now I'm just gonna conceal it with L'Oreal Infallible Concealer in the shade 312, और मैं वहीं लगाऊंगी जहाँ पे मैंने करेक्टर यूज़ किया था, just to conceal the character and just to have that even look. So I'm applying it under eyes, sides of nose, sides of mouth, और जहाँ पे भी मेरी स्कारिंग है. For the brush I'm using Sugar Face Brush in 006. This is a highlighter brush, but मैं इसे as a concealer brush यूज़ कर रही हूँ, and you can see I'm buffing the concealer really nicely. तो मैं दो तरह के motions यूज़ कर रही हूँ. One is round circular motion like this, and the second one is stamping. So ये दो motions के साथ I'm just blending the concealer really well into my skin, and मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हिला नहीं रही हूँ. जो भी प्रोडक्ट है मैं थोड़ा सा आसपास भी बफ़ कर रही हूँ ताकि एक इवन लुक आए. एंड यू कैन सी हियर कि जिस साइड पे मैंने ब्लेंडिंग कर लिया वो कितनी फ्लॉलेस एंड नीट लग रही है. एंड आई एम जस्ट गोना डू द अदर साइड एज वेल विद सेम ब्लेंडिंग मोशन, राउंड सर्कुलर मोशंस एंड stamping motions. एंड जो भी प्रोडक्ट बचा है ब्रश में, आई एम जस्ट टेकिंग इट टू कंसील माई फोरहेड. ऑल्सो मैं सेंटर ऑफ हेड को भी हाईलाइट करूँगी. वट एवर द कंसीलर इज़ लेफ्ट ऑन द ब्रश. मैं एक्स्ट्रा कोई प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रही, बिकॉज बहुत ऑब्वियस एंड बहुत ऑड लगेगा अदरवाइज. सो नाउ आई एम जस्ट सेटिंग इट यूजिंग F016 brush from Cuffs and Lashes, and I'm again stamping it. और इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, मैं अगेन सिर्फ ब्रश से ही इसे बफ आउट कर रही हूँ. अभी मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं लिया. अब मैं अपने अंडर आई सेट करूँगी. आई एम यूजिंग यूरोप कर्ल मिनरलाइज कॉम्पैक्ट इन द शेड मीडियम डार्क, और इसमें मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट उठा के उसी ब्रश के साथ आई एम जस्ट गोना स्टैम्प इट, एंड आई एम जस्ट गोना प्रेस द पाउडर रियली नाइसली इनटू द स्किन, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए जो भी हमने कंसीलर लगाया है और एक फ्लॉलेस लुक आए. So it's a summer makeup, so I'm just retouching my makeup using rose water from Kama Ayurveda again. It will hydrate your skin. और अब मैं अपनी eyebrows करूँगी, and I'm using Arc Arrival Brow Powder in 01 Cherry Brown. आप डायरेक्टली एप्लीकेटर से भी लगा सकते हैं, but I'm using an angular brush and I'm filling my eyebrows nicely with the brush. और इस तरह से I'm just filling the spaces inside my eyebrows to make it look a little fuller and natural.
coming to eyes, I'm using Sugar Coal of Honor Intense Kajal in the shade Brown Bag, और इससे मैं अपने जो लैश लाइन है इसे लाइन कर रही हूँ. आई एम गोइंग फॉर ब्राउन बिकॉज इट्स वेरी सॉफ्ट एंड मैं थोड़ा सा सॉफ्ट स्मोकी लुक देना चाह रही हूँ. एंड आई एम टेकिंग अ पेंसिल ब्रश एंड आई एम स्मजिंग द काजल हियर एंड डिफ्यूजिंग द काजल जस्ट लाइक दिस. सो I think I'm happy with the look, and I'm just gonna repeat the same with the other eye. And I'm again taking a pencil brush and smudging. और इसके बाद मैं एक small blending brush लेके I'm just gonna diffuse it a little more onto my lid. सो इट्स समर टाइम, तो मुझे थोड़ा कलर भी चाहिए अपने आईज़ पे जस्ट टू पॉप इट आउट. सो आई एम यूजिंग शुगर विविड आईलाइनर इन 04 येलो बर्ड. इट्स अ पेस्टल येलो और मैं इनर हाफ लाइन कर रही हूँ इससे जस्ट लाइक दिस. मैं फुल नहीं कर रही बिकॉज आई वांट टू क्रिएट सम ग्रेडियंट लाइनर लुक. और दी सेकेंड हाफ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कव्स एंड लैशेस का कलर पॉप आईलाइनर इन द शेड बम्बल बी, एंड आई एम mixing them together inner corners पे pastel and brighter on the ends. And now I'm just taking Maybelline Colossal mascara. You can always take a waterproof mascara because yes, summer का look है तो waterproof is better and smudge proof, but I like using a regular mascara than waterproof because निकालने में दिक्कत होती है otherwise. And I'm coating my lashes really nicely with the mascara. Now for the cheeks, I'm using Earth Rhythm Lip Cheek Tint in the shade Cherry. It's a beautiful shade और beautiful tint. बहुत ही अच्छे से blend करता है. It gives you that really nice glow as well. So I'm just taking a beauty blender and I'm blending it really nicely. और आप देख सकते हैं कितना पिगमेंटेड है. सो यू कैन ब्लेंड अकॉर्डिंगली, जितना आपको इंटेंसिटी रखना है. आप अगर ज़्यादा रखनी है तो कम ब्लेंड कीजिए. इफ़ यू वांट टू डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द टिंट देन यू कैन ब्लेंड इट मोर. सो आई एम जस्ट गोना ब्लेंड इट रियली नाइसली जहाँ तक मुझे इंटेंसिटी चाहिए. एंड इट गिव्स अ रियली नाइस ग्लो एज वेल टू योर फेस. You don't actually need a highlighter if you're using this tint. You can see that glow coming on my cheeks. Now for lips, I'm using two lip shades again by Cuffs and Lashes. This is their matte lipstick. पहले मैं यूज़ कर रही हूँ 06 Wari Jama shade and this is a brown shade. I'm lining my lips with this shade और अंदर मैं fill कर रही हूँ 02 Arabian Nights and this is a really nice blush pink shade and I'm mixing it together. एक ombre and gradient effect आ रहा है, आप देख सकते हैं. So it's a very nice blush color for summers, and this is the whole look. Now to set this whole look, because we really need a setter, I'm using Urban Decay All Nighter finishing spray. It's a very good finishing spray. I'm just gonna spray all over my face इस तरह and you're good to go. Your makeup will not budge. Foundation तो लगाई नहीं है but corrector and concealer लगाया है. It will stay intact and this is the whole look. And I really like this look for summers because it's a very fresh, dewy and it is kinda sweat proof. Sweating आना ही normal है but it will not go anywhere अगर आपको आ भी जाता है. Because हमने इसे अच्छे से प्रेप की है स्किन और अच्छे से सेट किया है मेकअप. Also I'm gonna do a transfer test. यहाँ पे एक white tissue paper है. I'm just gonna press it really nicely against my cheeks and आप देख सकते हैं there's hardly any product on the tissue and it is very much transfer proof. It looks very nice and dewy and it will not go anywhere if you are wearing this look in a hot summer day. I really hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा and I will be providing all the links in the description box and thanks you for watching and please do subscribe and stay healthy, stay happy and stay safe. Bye bye.